recent paper, May, June 2023. And it is about discussion on trial balance. How do you make a trial balance, as well as errors and suspense account, and some theory as well. Okay. This is May, June 2023, paper 2, variant 2, recent paper. Okay. So what we have to do, students, here is basically we have been given Amadi, there's a name of a person, prepared the following trial balance, which is not yet totaled and contain errors. तो इन्होंने total भी नहीं करा है trial balance को. They haven't done the total of the trial balance, and it contains errors as well. So there is Amadi who prepared the following trial balance. So which means कि क्या होगा कि this will help us understand more about the nature कि fixtures and fittings, fittings and equipment assets हैं तो debit side पे होना चाहिए था. So that's what we need to understand. Okay, so we need to prepare a corrected trial balance. Okay, students, at 31st March 2023, and we have to show the remaining balance between the debit and the credit totals as the suspense account. So already the format is there, everything is done for 6 marks. Just have to write the correct wordings in the correct column. Okay, correct numbers in the correct column. Everyone getting it? So that's why the 6 marks are easy, and just need to know that if you know the nature of the assets, liabilities, capital, expense, revenue, then you can easily do this. Okay, got it? Clear? Understood? Following? So let's Yes, start. sir. First thing, we have fittings and equipment at cost. Always remember, sir, fittings and equipment are the assets. So assets are always going to come in on the debit side, right? तो उन्होंने credit पे लिखा हुआ है, which is wrong. तो आपने fixtures and fitting equipment at cost को 30,000 debit पे लिखना है. Everyone got it? Clear? No problem. So we got 30,000 fittings and equipment, 30,000 as debit. सही है. Then provision for depreciation है. Always remember the depreciation of fittings and equipment will always the provision for depreciation is a contra entry. तो ये भी wrong है. This is basically contra to it. तो ये भी जो है वो ये credit पे आना चाहिए था sir, but इन्होंने debit mention किया, that is also wrong. तो हम जो है वो provision for depreciation of fittings and वो हम लिख देंगे credit side पर. Got it everyone? Clear? Yes, sir. Any questions, any concern? Anyone? फिर हमारे पास trade receivables है. Trade receivables is an asset, sir. तो वो सही है बिल्कुल. Because trade receivables is an asset, sir, so we'll write it out 6100 on the debit side because trade receivables is asset, current assets. ठीक है. फिर we have bank overdraft. Always remember what is bank overdraft. That you have done more expenses than the revenue. You have done more expenditure than what you have incurred. Or so bank overdraft is a liability. On all liability and all liability balances will be shown on the credit side. तो हम ये 31 bank overdraft जो है वो हम 3106 हम शो करेंगे credit side पर. That is bank overdraft on the credit side, sir, 3106. Got this clear, students? फिर trade payables तो correctly mention है because trade payable है ही liability, sir. So trade payables is how much you have to pay your suppliers. Trade payables is what? How much you have to pay, you have to pay to your suppliers, or the we can say them suppliers and creditors. Okay, ठीक है जी. तो 3485 ये ऑलरेडी करेक्ट जगह लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसके मार्क्स होंगे. मेक श्योर कि जो जो गलत लिखा हुआ है उनके मार्क्स आपको मिल रहे हैं. ठीक है, एवरीवन गेटिंग इट? क्लियर है? जो करेक्ट जगह लिखा हुआ है तो उसका कोई मार्क नहीं होगा. ठीक है. कैपिटल इज 20,000. एवरीवन नोज कैपिटल इज गोइंग टू बी आर capital nature is credit side. तो capital तो is your owner's asset जो भी आपने investment किया है, and the funds that you have put in your business from your own savings or from your own self, तो आपका capital है. Then we have sales. Sales also is the revenue. So revenue items related to revenue are always going to come on the credit side, right? Students got it? तो ये 73,250 will be definitely coming on the credit side. So we got sales revenue as 73,250. So we have put it sales revenue there. Then purchases, definitely अगर sales revenue है, purchases always comes on the debit side. तो ये यहाँ पर mistake है कि purchases को हमने यहाँ लिखना होगा. 41,785 is the purchases, sir. तो हमने purchases यहाँ लिखनी होंगी. Any doubts, any problems? Purchase is definitely debit. Sales is revenue, which is basically going to be credit. ठीक है. तो make sure your free marks and the 6 marks are free, students. You must know okay, what is the nature of the asset, liability, and capital, and you can do all of them. Okay. Next we have return inwards. So no.
sorry, purchases were 41,785. Till there we have done. Make sure then we have discount received. We have already talked about it in previous classes. That's our discount received is definitely our income. Income means revenue, and revenue will always be coming on the credit side, right? So discount received will be coming, sir, 1,990 on this side. Got it, students? Clear? Any questions? Any doubt? Anyone? Then you have return inwards. So always remember, return inwards is contra to the sales. Okay, whatever you have made the sales to your customer, and if the customer is returning some goods to you, if the customer is returning some goods to you, it means it is contra. If sales is revenue on the credit side, sales return will always be on the debit side. So this is correct. 3,390 will always come on the debit side. That is return inwards, or you can say that, sir, it is basically sales return or return inwards. Okay, everyone getting it? Any terminology, anything that not getting in any terminology, let me know now. Clear? Everyone got this up till now? Yes, sir. 3,390 is the return inwards. It's against the sale. If customer have returned some goods to you by saying that it is faulty, damaged, or they don't want it, they want the refund for it, and it's not what they required, it's not according to the requirement, so they will do return inwards. Okay. Carriage inwards we already talked about in the inventory valuation topic, that carriage inwards is basically when you bring the cost, it is the cost that you incur for bringing the raw materials to your factory warehouse for further production manufacturing plant. So it is the cost that you incur and it is added in the purchases. It is basically added with the purchases section. So both will have the same nature. Carriage inwards will also be an debit side. Okay, so carriage inwards will also be written on the debit side, sir. So here we go, 1,000, and we have carriage inwards as $1,223. So carriage inwards comes here. Everyone knows expenses. It's the word itself. Expenses 6,430. Expenses always comes on the debit side, sir. 6,430 is the general expenses. Then we have rent and rates. Rent and rates. Yes, I can write it down. That's our rent and rates are expenses. So we'll write down that rent and rates are expenses. So 7,380 is another expense for rent and rates. And then rent and rates is done. Then we have drawings, inventory, and suspense account, right? So we talk about drawings. Drawings is always contra to the capital. We have discussed in detail that, sir, drawings are basically whatever the owner, and the owner we have here is Amadi, who taking for personal purpose, taking for personal use any of the goods or the cash, if he or she is withdrawing the cash on for personal use. So drawings will always be contra. So if capital is credit, drawings will always come on the debit side. So you see the last couple of items will not have marks, because you just have to copy paste it as they're all coming. Most of them are coming on the debit side. Okay, so they are all written correct. Okay, so if you see, if we look at it, sir, this was written wrong, this was written wrong, this was written wrong, everything was correct here, this was written wrong. So 4 items were written wrong, 5th item written wrong, and then all of, so 1, 2, 3, 4, 5, and there is this opening inventory and the closing inventory. Everyone getting it, students? Clear? There is this opening inventory and closing inventory. So very important concept that they are trying to test you here. They are trying to see whether student knows the concept or not. Always remember, in a trial balance, only the closing inventory, the opening inventory will come in. Okay, okay. In the trial balance, only the opening inventory will come in, because if you have remember the format, जो closing inventory होती है, the adjustment for the closing inventory comes in the other information. Okay, the adjustment for the closing inventory, it comes in the other information. Following? Got this clear? No problem? No doubt? Okay, so here we go, that the inventory is 3,752, and so we'll write down the opening inventory only. Inventory is an asset, sir, so make sure understand that the asset is going to come on the debit side. Let me write it down, inventory is an asset, and closing inventory will not come. Okay, hope everyone got this. Closing inventory will not be a part of trial balance. You can write it down as well. You can make a note as well, students, that closing inventory never comes in the trial balance, because closing inventory, if we look at partnerships, sole traders, and if you have seen all the adjustments, always remember closing inventory is written later down, right? So we'll only take the
we'll only take this. This is written wrong place, okay? So if you see there were 6 marks, okay? It was a 6-mark question, and usually 1, 2, 3, 4, 5, 6 things were written wrong. They were placed wrong. They were, if it was have to be debit, usko agar debit pe likhna tha, तो they have recorded at credit side. So that was the wrong. ठीक है? Now you'll do a calculator and see where the difference is coming. Wherever the difference is coming, that is basically suspense account difference of the trial balance. Okay, everyone got it? Clear? Yes, 30,000. Any questions? 30,000 plus 6,100 plus 41,785 plus 3,390 plus 1,223 plus 6,430 plus 7,380 plus 9,500 plus 3,752. So I'm getting this as 109,558. This one. Maybe some calculation error might be there. So let's check 41,785, 6,100, and we got 3,752, my bad. So 109,560 I'm getting. So let's write it down, both of them, 109,560 here and 109,560 here. Just add the credit side and see where the difference is coming. When you add the credit side, we are getting it as 3,485 plus 20,000 plus 73,250 plus 1,990. I'm getting it as 109,331, which means that the debit side is greater than the credit side. Students getting it? So you will find out the difference here, write it for the examiner, that 109,560 minus the debit side minus the credit side. If I'm doing the subtraction for it, everyone getting it? So Yes, I'm sir. going to get the answer that is going to be 229. So the difference in the trial balance, is only coming for 229. That is the balancing figure, and 1 mark is for this as well out of the 6 marks. If you have made everything correct, if you have made the trial balance correct, you should be getting 229 as your balancing figure. It will also be called the balancing figure and the suspense account figure as well, because we understand that the debit side was greater than the credit side. So we subtract the debit minus the credit, and make sure you remove this from your working. Just show these things, okay? If you are doing a total now, do it in pencil, okay? And write it down separately somewhere, okay? The last values should be made correct, okay? Got it? Clear? Should you move forward? This is trial balance done, okay, students? Clear? Yes, sir. Everyone got it? Moving forward, we have the errors and the suspense account. So the first thing will be, we have already talked about it. So let's work it out. First thing will be, you will write it down here. We'll look at the 3 errors that we have. Definitely we'll look at them, but we have to understand that difference in the trial balance. Suspense account balance will be coming here, that the difference in the trial balance is 229, okay? So difference in the trial balance is 229 because it was coming on credit side. So I've written in the suspense account. And the best thing will be, if you will do the correct errors, now if you will correct the errors, if you will do the errors correctly, the suspense account will balance itself. Okay, students, the suspense account will balance itself. So it's a 5 marks again, numerics, apart from the 6 marks of numerics of trial balance. We have 5 marks. So now what they are doing here is they are saving their time here, and they're asking the students to directly do it, okay? So which means that they are not asking you to draw the journal entries as they have asked you in some other questions, okay? As they have asked you in some other questions, they are not asking you the journal entries. They are directly asking you make a suspense account, okay? They are directly asking you make a suspense account. They are not asking you to do the journal entries, but as we already know, the best thing is to do journal entries first, and because we are learning, so we are going to do the journal entries, okay? Getting it, students? Clear? And then we are going to do it, okay? So here we go. Because we are learning as well, so I'm going to explain you the journal entries once again. So the first error is very simple. Already have discussed previously as well. The general expenses account has been undercast by 200. Whenever you see the word of undercast, overcast, it will be, sir, error affecting the trial balance, and the suspense account will definitely come in, okay? Error affecting the trial balance whenever you see the word of undercast or overcast. So what has happened, sir? How to correct the entry? The general expenses, it's an expense, sir. The expense account had been undercast. In simple words, sir, हमने expenses को कम लिखा है, तो हमें expenses को बढ़ाना पड़ेगा. Undercast का मतलब हमने कम लिखा है. तो sir, here we go.
You are going to write out the general expense account debit, क्योंकि debit पे expenses बढ़ते हैं sir. So general expenses account will be debited by $200, and if there is nothing else, suspense account will become credit by $200 for the general expenses against. Okay, so here we go. आप साथ साथ adjustments भी करते रहे कि sir $200 will come in for general expenses because suspense account is being credited due to the reason that the general expenses were undercast. Okay, got it? Clear? Any questions? Sure, everyone got this? Then we have a rent payment. A rent payment $516. It had been posted to the rents and rates account as 615. Okay, so error number 1 is done. Let's talk about error number 2. Any questions on error number 1? Can I get a response quickly? Everyone got it? Error number 1. Okay, so we have Yes, sir. error number 2. Error number 2 is rent payment. That is, it was a rent payment of $516, but it had been posted to the rent and rates account as basically as 615. Okay, so in simple words, what have happened, sir? कि एक आपने रेंट की पेमेंट करनी थी $516 की, लेकिन आपने रेंट एंड रेट्स अकाउंट्स को ज्यादा $615 से शो कर दिया, तो विच मीन्स आपने रिफ्लेक्ट कर दिया कि आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया. ओके, इफ एवरीवन कैन सी द अमाउंट्स, आपको पेमेंट करनी थी सर $516 की. ये एरर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पेमेंट करनी थी $516 की, लेकिन आपने अकाउंट में शो कर दिया कि 615 से पेमेंट कर दिया रेंट एंड रेट्स अकाउंट से. सो इन सिंपल वर्ड्स, आपने एक्सपेंस को क्या कर दिया सर? हमने एक्सपेंस को ज्यादा लिख दिया. वी हैव रिटन द एक्सपेंस एज मोर. हमें एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा. एक्सपेंस कम कहाँ होता है? क्रेडिट साइड पर. तो सर रेंट एंड रेट्स विल बी सबट्रैक्टेड. रेंट एंड रेट्स विल बी क्रेडिटेड by how much amount? The difference between them, 615 minus 516. Okay, the difference between them कि हमें रेंट एंड रेट्स अकाउंट्स को कम करना है, तो $99 से रेंट एंड रेट्स अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे. ठीक है, और बिकॉज दे हैवंट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट द बैंक अकाउंट के बैंक, विच मीन्स के वी आर अज्यूमिंग के बैंक में पेमेंट सही हुई है. हम यहाँ अज्यूम करें कि जो पेमेंट हुई है, पेमेंट फ्रॉम द कैश बुक, चेक के थ्रू हुई, कैश के थ्रू, वो सब सही हुई है. तो जो डिफरेंस होगा, इसकी जो मिस्टेक है, वो भी सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा इस केस में, क्योंकि हमारे पास बैंक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो वी आर अज्यूमिंग के बैंक में सही रिकॉर्ड हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय $99. ठीक है जी स्टूडेंट्स, ड्यू टू रेंट एंड रेट्स. ठीक है, कोई डाउट, कोई कंसर्न तो प्लीज डिस्कस कर लें. No, sir. ठीक है, तो वी गॉट रेंट एंड रेट्स एज डेबिट फॉर $99. हमें 2023 में एंड ऑफ द ईयर में काम कर रहे हैं, तो यू कैन राइट डाउन 31 मार्च डेट है सर. हमारा एंड ऑफ ईयर 31 मार्च हो रहा है 2023, तो सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर हो रही हैं. फिर आई रिपीट माय पॉइंट कि वी हैव रिटन फॉर द सेकंड एरर, सर वी हैव रिटन, हमने पेमेंट करनी थी $516 की, बट पेमेंट ज़्यादा अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही है कि हमने $615 से पेमेंट रिफ्लेक्ट कर दी है, तो रेंट एंड रेट ज़्यादा पे कर दिया, उनको कम करना पड़ेगा. If any expense you have to less it, you will be putting it on the credit side. So rent and rates account को credit करा sir. And because we are assuming here कि बैंक बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ था, बैंक में हमने पेमेंट करी तो बैंक क्रेडिट ही हुआ था, तो if there's anything not else mentioned, तो हम सस्पेंस अकाउंट को ले आएंगे कि सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस जाएगा $99 का डेबिट साइड पे. Hope everyone got this clear. And now we have the third adjustment, third error. Follow very carefully, following everyone. Clear? First two में कोई problem किसी को? I'm waiting. Any questions for first two errors? Let me know. No, sir. ठीक है. The totals for the total for the discount received in the cash book for February 2023. The total for the discount received in the cash book for 2023 $165 had been debited to the drawings account. No other entry for this total had been made. No other entry for this total had been made. तो डिस्काउंट रिसीव का जो कॉलम था कैश बुक में, उसको ड्राइंग्स में डेबिट कर दिया है, तो लॉट ऑफ मिस्टेक्स आर बीइंग मेड. ठीक है, तो पहले इसमें हम वाला अप्रोच अप्लाई कर लेते हैं कि क्या हमने करना चाहिए था. हमें डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना था, जो कि हमने नहीं करा, हमने ड्राइंग्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया. ठीक है, तो स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि करेक्ट एंट्री क्या होगी इसके अंदर. फॉलो करते हैं कि हाउ विल वी मेक अ करेक्ट एंट्री इन दिस वन. ड्राइंग्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, ड्राइंग्स तो थी नहीं, लेकिन हम ड्राइंग्स में हमने उसको डेबिट कर दिया. तो सिंपल सी बात है कि सर फर्स्ट स्टेप विल बी के ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं. तो होप एवरीवन गेट्स दिस कि हमें ड्राइंग्स को क्रेडिट करना पड़ेगा सर.
तो ड्राइंग्स विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि ड्राइंग्स को उन्होंने डेबिट कर दिया, हालांकि जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ड्राइंग्स अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये हम ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे कि भाई ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएंगे बाय द अमाउंट ऑफ $165। हमने डिस्काउंट रिसीव रिकॉर्ड नहीं करा सर, तो वील हैव टू रिकॉर्ड द डिस्काउंट रिसीव इन द कैश बुक से टोटल। तो डिस्काउंट रिसीव इज गोइंग टू कम here as well. Discount receive is going to come as discount receive, हमने डिस्कस करा कि इनकम होती है, तो डिस्काउंट रिसीव एज $165 हमने इनकम रिकॉर्ड करी। एंड देन इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि कोई और एंट्री हुई नहीं है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट से ये डेबिट हो जाएगा, कि सस्पेंस अकाउंट विल बिकम डेबिट बाय द अमाउंट ऑफ डबल 165 प्लस 165, दैट इज $330 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट पे तो हमने एडजस्टमेंट्स को रिफ्लेक्ट करा है। तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन हियर इज कि सर यहाँ पर एडजस्टमेंट आ जाएगी कि ड्राइंग्स आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ड्राइंग्स ऑफ $165, एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ द $165। तो ये एडजस्टमेंट होंगे। एंड आप देखें 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आप इनको बैलेंस करें, मोस्ट प्रॉब्ली दे शुड बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी अकाउंट है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट अकाउंट सर, तो ये खुद ब खुद सेल्फ बैलेंसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक एज होगा, अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको एरर समझ में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि सर मेरा फाइनल बैलेंस, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हमेशा बैलेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सर अगर आपको ओरिजिनल डिफरेंस पता है, द चैप्टर की जो इजी बात है वो ये है, द चैप्टर की गुड थिंग इज कि अगर आपको if you already know about it, if you already know the original amount, the difference in the trial balance, तो आप फिर इसको बैलेंस करके आ सकते हैं एग्जाम में कि सर ये बैलेंस करना था तो इस तरह बैलेंस हमने कर दिया। अगर कोई एरर क्लियर ना हो तो आप इस तरह भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो here it is, 11 marks done for this question. Okay, let me know, got it clear? Any problem? $429 से ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है। Everyone got this clear? Yes, हेलो, sir. ठीक है। किसी को डाउट है प्लीज पूछें, अगर डाउट है तो कोई। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस हो गया। देन अगेन फॉर सम मार्क्स वी हैव टू ड्रॉ द ट्रेडिंग सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेडिंग सेक्शन क्या होता है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फॉर्मेट एज वेल, एंड वी ओनली हैव टू डू इट फॉर 4 marks, द ट्रेडिंग सेक्शन of Amadi's income statement. So we have to make her income statement as well, but only the trading section. So always remember, trading section is only students till the gross profit, ठीक है। So we have to make trading section but only till the gross profit. People following, getting it? And इससे क्या होता है कि हर every adjustment, everything written have some benefit, everything written have some benefit, आप follow करें। तो you'll be starting with revenue, ठीक है। Let's start इनकम स्टेटमेंट, उन्होंने फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है कि अमादी का इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, ट्रेडिंग सेक्शन for 4 marks. Any questions in part B? Let me know now. Part C, any questions in part B? Quickly. किसी को डाउट है प्लीज पूछें। No, sir. ड्राइंग्स को उन्होंने डेबिट No. कर दिया जो कि एग्जिस्टिंग नहीं थी, ड्राइंग्स को हमने फिनिश करा पहले क्रेडिट पे लाके, फिर हमें जो रिकॉर्ड करना था हमने वो रिकॉर्ड करा सर, हमने डिस्काउंट रिसीव को रिकॉर्ड करा। एंड इफ देयर इज नथिंग एल्स वी हैव टू राइट डाउन सस्पेंस अकाउंट एज डेबिट, ठीक है। तो विल राइट डाउन द रेवेन्यू, हाउ मच रेवेन्यू अमादी हैव मेड। सो रेवेन्यू दैट इज सेल्स, sorry, that is 73,250. People following? Revenue is basically 73,250. आप इससे स्टार्ट करेंगे सर, रेवेन्यू से स्टार्ट होता है सर, 73,250 एज रेवेन्यू। प्लीज मेक श्योर चेक करें कि इफ देयर इज एनी रिटर्न इनवर्ड्स, डेफिनेटली देयर इज रिटर्न इनवर्ड्स, देयर इज रिटर्न इनवर्ड्स ऑफ 3,390, so you'll have to subtract return inwards here. Okay students, got it? You have to subtract return inwards here. This is the format as well, I already have shared as well, I remember. तो मेक श्योर आपने रिटर्न इनवर्ड्स को सबट्रैक्ट भी करना होता है, ठीक है। तो यू हैव टू सबट्रैक्ट रिटर्न इनवर्ड्स, so it will be 73,250 minus 3,390, so I am going to get 69,860 as the net revenue, 69,860 as the net revenue, net sales. Okay, net revenue, net sales. Then you start off with sir less cost of sales, so you have to write down the cost of sales as well. So cost of sales will be, sir, we already have the opening inventory, so make sure write it like this. This is the format as well, opening inventory. So if your year is ending on 31st March, it must be starting on March, January, February, March, April. So inventory at 1st April 2022, at the start of the year, how much was the inventory, sir?
it was 3,752 was the amount. So here we go, sir, 3,752 as the opening inventory. Then you add purchases to it, students, okay? So you will add some purchases in it. Purchases value was 41,785. Sir, 41,785 as the purchases value. Getting it, students? Then also remember, according to the format, carriage inwards will come in here, okay? This is just format based marks that you will get. That's how much easy it is. कि आपने format कर लिया तो आपको carriage inwards मिल जाएंगे marks. Carriage inwards was around something 1,223. Let's check as well. Yes, carriage inwards is 1,223. Always remember, carriage inwards comes in here, students. So we got carriage inwards as well, opening inventory plus purchases, carriage inwards, and then you subtract the closing inventory, okay, students? So the closing inventory, you are going to write it down, and closing inventory at the end of the year. That's why I said that every information is important. Closing inventory at 31st March 2023 is how much, sir? It's written there that at 3,965 is the closing inventory. And here we go, sir, 3,965 is the closing inventory. You subtract this and you will get the cost of sales. Sales revenue minus the cost of sales is the gross profit, okay, students? So here we go, sir, it is the gross profit. And this is basically only called the trading section, okay? We don't have to make the income statement in recent papers. They are only asking small part, okay, not the whole income statement. They don't need the whole income statement. They just want simple parts, okay? So I think 42, make sure do the calculation. 42,795 is the cost of sales, students, and you subtract it from 69,860 minus this. So I'm getting 27,065 as the gross profit. And here you go, you will get it all 4 marks as well, okay, students? Everyone got it? This is only the trading section, ठीक है? Other incomes जो होती हैं like discount receive, commission receive, rent receive, provision for doubtful debts decrease, तो वो remaining part है, profit and loss section का part है. If we are talking about the trading section, this is basically the trading section, okay, students? Everyone needs to understand कि sir, this is called the trading section, okay? Hope everyone got it. सही है जी? Clear हो गई बात? And that's how Yes, you sir. got 4 marks, okay? So we got it. Next learning is something new. It's from the ratios perspective, but because we are doing in a part of questions, so we will learn. Make sure just like you have learned markup, okay? How many people remember the markup formula? It will help you in A levels everywhere. Markup was based on cost of sales, okay? So markup is, I'll repeat, markup is cost 1 plus R is equals to S, where C is equals to cost of sales or cost, R is the rate, and S is the selling price or the sales. Okay, so markup is this. So students need to understand, they are asking you to find the gross margin, okay? Amadi's gross margin correct to 2 decimal places. You have to find the gross margin. It's a ratio. First, you will do the working. So working, you need to understand what is the formula. The formula is gross margin is basically the gross profit divided by the sales or the revenue. Sales भी कह सकते हैं, revenue भी कह सकते हैं, net revenue into 100. So students need to understand कि आपने क्या लेना है. You have to take 27,065 as the gross profit. People getting it clear? 27,065 as the gross profit. This figure divided by the net sales revenue, that is 69,860, multiply by 100. Whatever the answer is coming, you'll write in the other section. 27,065 divided by 69,860. So gross profit divided by the revenue. So it is 38.74. Yep, 2 decimal places you have to give, to 38.74%. And that is going to be the answer that you have to tell the examiner. Okay, everyone got it clear? Students got Yes, it? sir. Any problem? ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? ओके, एवरीवन गॉट दिस? ठीक है, तो मैं आपको आज मार्जिन का एक और फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्जिन आप कैसे निकाल सकते हैं. तो मेक श्योर फॉलो केयरफुली. ये दिस वर्किंग शुड बी क्लियर कि हमने 38 पॉइंट कैसे निकाला है. सही है, एवरीवन गॉट दिस? आप ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर सकते हैं रेवेन्यू के साथ, इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा. एवरीवन गॉट इट? मेक श्योर यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन फॉलोइंग विथ मी?
ये मार्कअप का sir. फॉर्मूला मेक श्योर कॉपी डाउन कर लें, ओके, ऑल्दो दिस ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस रिकॉर्डिंग, ओके, सो आप देख सकते हैं वहां से। अगर मार्जिन का फॉर्मूला चाहिए तो एक और मार्जिन का फॉर्मूला है, कोई ग्रॉस मार्जिन निकालना है तो मार्जिन फॉर्मूला इज बेसिकली एस वन माइनस आर इज इक्वल्स टू सी। अगेन द सेम थिंग, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्ट एंड एस स्टैंड्स फॉर सेल्स रेवेन्यू, और आर इज बेसिकली द रेट, जो कि वो फाइंड करने को कह रहा है कि रेट इज द परसेंटेज, ओके। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वन माइनस आर इज इक्वल्स टू कॉस्ट, आपको पता है कॉस्ट ऑफ सेल्स वर 42,795 डिवाइडेड बाय, सब फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 42,795 डिवाइडेड बाय द नेट रेवेन्यू 69,860, कॉस्ट डिवाइडेड बाय द सेल्स रेवेन्यू, और फिर आप इसको इस तरफ ला जाके ऐड कर दें तो आपको सेम आंसर आएगा, ठीक है। जस्ट 38.74 आपको बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स गॉट इट, क्लियर है बात? हेलो, एवरीवन गॉट दिस? कोई Yes, प्रॉब्लम sir. किसी को? Yes, sir. आप इसको भी ट्राई करके देख लें, आपको 38.74 मिलेगा। दोनों से वर्किंग पॉसिबल है, बट बेहतर है कि इस क्वेश्चन के लिए आप ये वाली वर्किंग करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आप आगे भी लर्न कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। बट एक और तरीका भी है निकालने का, ठीक है, जो कि 100% हर जगह यूज होता है। जो मेरा फॉर्मूला है C1 + R इज इक्वल्स टू एस और S1 - R इज इक्वल्स टू सी, दे वर्क एवरीवेयर, ओके, वो हर जगह वर्क करते हैं, ठीक है। देन फिर हमें 12 मार्क्स, फिर सॉरी 17 मार्क्स का कंप्लीट न्यूमेरिक्स था इस पेपर के क्वेश्चन में। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जिसमें कंप्लीट न्यूमेरिक्स आ जाए 20 मार्क्स का, या 15 मार्क्स तक न्यूमेरिक्स आ जाए और ओनली 3 to 4 मार्क्स की थ्योरी आए। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि 3 मार्क्स की थ्योरी है, ये एनालिसिस है। अमादीज मेन कंपटीटर इज हेक्टर, सो उनका जो मेन कंपटीटर है वो हेक्टर है, who owns his business premises, उनकी भी अपनी ओन बिजनेस प्रेमिसेस, मतलब सोल ट्रेडर है। अमादी एंड हेक्टर हैव सिमिलर ग्रॉस मार्जिन्स, उनके जो ग्रॉस मार्जिन है वो सिमिलर है, लेकिन हेक्टर का जो है वो हायर प्रॉफिट मार्जिन है, सही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि क्या हो रहा है। एक्सप्लेन वेदर और नॉट अमादी शुड बी सेटिस्फाइड विद दीज रिजल्ट्स और नॉट, कि अमादी जो है वो सेटिस्फाइड होंगे या नहीं सेटिस्फाइड होंगे इस रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो दोनों बिजनेसमैन है, जो दोनों बिजनेस ओनर हैं, अमादी एंड हेक्टर ANH, उनके ग्रॉस मार्जिन सेम है, विच मीन्स कि उनकी जो 38.74% आ रहा है वो ऑलमोस्ट उनके दोनों के याले मार्जिन सेम है, विच मीन्स के वो एक ही सप्लायर से एक ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ सप्लायर्स ले लेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में हैं और उनके सिमिलर कस्टमर्स हैं, उतना ही रेवेन्यू हो रहा है, दोनों के अच्छे मार्केट शेयर है, दोनों रेवेन्यू सेल्स कर पा रहे हैं। उनकी तकरीबन परचेज की कॉस्ट, जो भी उनके सप्लायर हैं वो उनके सप्लायर भी हैं, जो उनको गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, जिनसे वो गुड्स लेते हैं, उनके गुड्स वो भी हैं। तो यहाँ तक तो बात सही है। वो जो कह रहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट है उसके बारे में वो डिस्कशन करना चाह रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है, जो मेन पॉइंट है वो ये कह रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन डिफरेंट है। अब पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है सर। प्रॉफिट मार्जिन बेसिकली जो आपका नीचे वाला सेक्शन है, ट्रेडिंग सेक्शन के बाद जो आता है सर, वो प्रॉफिट वाले मार्जिन की बात करें कि अगर प्रॉफिट मार्जिन को देखा जाए तो हेक्टर जो उनके कंपेटिटर हैं उनका ज्यादा है, हेक्टर का प्रॉफिट मार्जिन इज मोर एज कंपेयर टू अमादीज। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये उनके लिए, अमादी के लिए सेटिस्फाइड होंगे इस रिजल्ट्स के साथ या नहीं होंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड के यहाँ पर जो है वो इन्होंने एक पॉइंट लिखा है तो आपने वो पॉइंट डेफिनेटली मेंशन करना पड़ेगा। तो हेक्टर की जो है वो अपनी ओन बिजनेस प्रेमिसेस है। अगर आप कोई पीस ऑफ लैंड ओन करते हैं तो आपको रेंट नहीं देना उस पर, गेटिंग इट। लेकिन अगर हम देखें अमादी के, अगर हम एक्सपेंसेस देखें तो अमादी के जनरल एक्सपेंसेस भी हैं, रेंट एंड रेट्स भी हैं, गेटिंग इट स्टूडेंट्स। जनरल एक्सपेंसेस हैं, रेंट एंड रेट्स हैं, फिर उनकी जो है उनके, उनको इतनी कोई खास इनकम नहीं है, खाली डिस्काउंट रिसीव ही एक इनकम मिल रही है उनको। तो उनके रेंट काफ़ी ज़्यादा है, रेंट है उनको, क्या वो उनकी जो वो रेंटल प्रेमिसेस होंगी अमादी की। तो हम ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि डेफिनेटली कि दोनों के प्रॉफिट मार्जिन्स डिफरेंट होंगे। उसका रीजन है कि मे बी दोनों ने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस टाइम पे, पीरियड पे स्टार्ट करा हो, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के हेक्टर, इसका मतलब क्या है कि अगर उनके प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है हेक्टर के तो हेक्टर हैव लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। हेक्टर इज इंजॉइंग द बेनिफिट, इज इंजॉइंग, हेक्टर इज इंजॉइंग, सही वर्ड नहीं रहेगा, वी कैन राइट के हेक्टर हैज लेस एक्सपेंसेस, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 minute।
Okay, let's continue. So what we are saying is basically that Hector has less expenses as compared to Amadi because he owns the premises building. ठीक है? He owns his building. He is the owner of the premises, business premises, while Amdi have to pay this person. The other sole trader have to pay the expenses, okay? Have to pay rent, while Amadi have to pay the rent, okay? Getting it, people following? So they have to pay, she have to pay the rent and maintenance cost, we can say. Everyone getting it, she has to pay the rent, which indicates which indicates the reason why Hector is experiencing more profit margins. ठीक है? तो बेसिकली आपने यहाँ पर यही पॉइंट मेंशन करना है कि ऑल्दो उनके ग्रॉस मार्जिन सेम है, मतलब उनकी कॉस्ट ऑफ सेल सप्लायर्स उनके सेम है, जो डिफरेंस आ रहा है हायर प्रॉफिट मार्जिन का वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक के एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, अमादी के एक्सपेंसेस आर मोर एज कम्पेयर टू हेक्टर. हेक्टर के इतने एक्सपेंसेस नहीं है क्योंकि वो अपनी प्रेमिसेस ओन करते हैं तो उनको रेंट पे नहीं करना, अमादी को रेंट पे करना है. And that is why which indicates why Hector have higher profit margins. Okay, Hector have higher profit margins. Higher profit margins. So Amadi should be satisfied. ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. आप लिख सकते हैं कि Amadi should be satisfied क्योंकि वो एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन वो अच्छा मेक कर रही है बिजनेस को. इन द नेक्स्ट पार्ट अभी उसके पास अपनी बिजनेस प्रेमिसेस नहीं है, मे बी शी माइट हैव स्टार्टेड रिसेंटली, तो हम कह सकते हैं कि Amadi शुड बी सेटिस्फाइड. एक मार्क आपका डिसीजन भी होगा तो Amadi शुड बी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स. तो 2 मार्क्स आपने एक्सप्लेन करना है और यही फैक्टर आपने एक्सप्लेन करना होगा कि जो डिफरेंस है वो किस वजह से आ रहा है. आपने Amadi को पॉइंट आउट कर दिया तो शी शुड बी सेटिस्फाइड with the results she got. Okay, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई बात. विद दिस ये 20 मार्क्स कंप्लीट हो गया. हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस करें. एनीवन? हेलो, ठीक है जी, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मेक श्योर जरूर रिवाइज करें एंड विल मीट